तो शुरू करते हैं। इकोज, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड द इको। द बेस्ट इको हेड इन माउंटेन वैली। द साउंड वेव बाय आवर ईयर रिफ्लेक्ट्स इट। It continues within 1/10 second of a sound following the origin sound if stopped. ठीक है, therefore for the production of and the echo we must be able to have a clear distinction between the origin sound and the sound which reflects 1/10 second after the origin sound. Now let us consider the velocity of sound 340 meter per second in air such that the sound must be come after the passing a distance of 34 meter, क्योंकि 1/10 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34। दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड मस्ट बी हाफ ऑफ द वैल्यू, दैट इज 34 का आधा 17 मीटर। ये होंगे इको सुनने का दूरी। तो डिफरेंस बिटवीन इको एंड द रिवर्बरेशन। तो इको, द रिपीटेशन ऑफ साउंड काउज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एंड द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज इको। द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द साउंड persist in the hall is called the reverberation time, and it is the measured from the time the source has stopped producing sound. अब है इसका सेकंड पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स मस्ट बी 17 मीटर फ्रॉम द इको टू बी हेयर्ड। द साउंड एनर्जी गेट्स द डिसिपेटेड फास्टर इफ फ्रिक्शन इज मोर। थर्ड है, द रिफ्लेक्शन साउंड मस्ट बी रीच द लिसनर 1/10 second after the original sound is produced. Some sound persist in the room even after the source stopped emitting sound, hence the sound of the decreasing energy is heard, which leads to confusion. अब है absorbing power of the surface. The ratio of the sound energy absorbed by a surface to a total sound energy incident on it is called the absorbing power or coefficient of the absorption of the surface. It is represented by A, that is A equal to sound energy absorbed by the surface divided by total energy, sound energy incident on the surface. ये ऑब्जर्विंग पावर का फॉर्मूला है। द ऑब्जर्विंग पावर ऑफ ए सरफेस डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द सरफेस। सम सरफेसेस ऑब्जर्व द मोर साउंड देन अदर्स। ए पोरस सरफेस हैज मोर ऑब्जर्विंग पावर देन दैट ऑफ the smooth surface. An open window is perfect sound observer. It is because the whole of the sound energy pass through it and noise is reflected and none is reflected. None is reflected. अब the coefficient of the absorption of a surface is the ratio of sound energy absorbed by 1 meter square of the surface to that absorbed by 1 meter square of the open window. That is A equal to coefficient of absorption. Coefficient of absorption अगर A हो तो sound energy absorbed by 1 meter square the surface, the sound energy absorbed by the 1 meter square of open window. तो coefficient of absorption का वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करता है। अब है acoustic buildings. The branch of physics which deal with the production of the best sound effect in the public building, cinema hall, lecture hall, auditorium etc. is called the acoustic of building. अब है design of the good acoustic building. There are some factors to be satisfied in the design of and the acoustically good building. Selection of site for the building. The site for the building has to be selected in such a way that is the free from noise disturbance, example railway track, highway or airport. Second point है planning and the design. Planning has to be taken into account which the purpose the building uses, whether it is for the music or speech purpose, and then the design
accordingly. The design of the building should take care of the nature and type of the sound that the building is going to be used. For when it is ready, the height of the ceiling and the reverberation time for the auditorium are related as the ये हाइट है h इक्वल टू 20t, ये कैपिटल T है रिवर्बरेशन टाइम और T मल्टीप्लाई. थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द बिल्डिंग. द वॉल्यूम एंड द शेप शुड टेक केयर ऑफ द इंटेंडेड यूज फॉर द बिल्डिंग्स. द इनसाइड वॉल्यूम मस्ट बी मैक्सिमाइज फॉर द सीट फॉर पीपल्स. साउंड distribution and the absorption in the building. Keeping in mind the required acoustics, the building has to have proper ventilation, absorbing materials, enough exit and the entry points. It should be the designed so that it has the maximum and efficient sound proofing of good acoustics. तो ये फिगर है, जैसे ये हाइट h है और ये सीट बनाया है, यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये इस तरह से आएगा और ये गुड है और ये बेस्ट काफ़ी अच्छे के लिए इस तरह से 20t हाइट की रेशियो होना चाहिए, h इक्वल टू 20t और हाइट आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, तो इसमें इतना ही, आगे फिर अगले नेक्स्ट में देखेंगे.